फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अनदर बुक्स ही है मांगा रिलेटेड, और हमें थोड़ा चस्का लगा है मांगा का, एंड दैट्स यू ऑल्सो वांटेड टू सी, तो हमने शिट थोड़ा सा हाथ कट गया. दिस इज लेजेंड्स ऑफ जेल्डा, नॉट मांगा स्पेसिफिक बट इट्स वेरी फेमस इन स्टीम ने उसको क्या बोलते हो, जो हैंडल्ड वाला आता है निंटेंडो का. सो आई हैव नॉट प्लेड इट बट आई हर्ड अ लॉट, तो आई वांटेड टू सी कि क्या है. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी, एंड आई डोंट लाइक द वीडियो वाला, मेरे को थोड़ा विजुअल मीडियम पढ़ने में ज़्यादा बेटर मज़ा आता है. तो उसके लिए हमने ये ऐसे में ऑर्डर किया है. तो इसको जितने हो सके आराम से वी विल कट इट थ्रू द लेजेंड ऑफ जेल्डा. सो पैकेजिंग इज इंटैक्ट, आई वुड से बॉक्स सेट जो रहता है, एंड आई लव इट बिकॉज फिर वो एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक ढूंढते 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 फिर वो. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, द लेजेंड ऑफ जेल्डा, एंड ऐसे में ऐसे दिखता है. एंड देन दिस इज अनदर साइड, आई डोंट थिंक कि प्रिंट कैसा है. दिस इज द बार कोड, इट सेज $129, हमें कुछ 2000 का पड़ा है. तो आई नो इट्स नॉट कोई, कांट बी अ रियल. तो कमेंट में बताना अगर आपको रियल लग रहा है कि नहीं. दिस इज जेल्डा ट्वाइलाइट प्रिंसेस, कंटेंट्स वॉल्यूम 1 to 11, कंप्लीट बॉक्स सेट, स्टोरी बाय अकीरा हिमेकावा. एंड ये थोड़ा सा खुला हुआ है टेप, तो आई डोंट नो मतलब कैसे यूज़ हुआ है, बट नाइस वे ऑफ. ओके, इसमें कहा है 11 बुक का सेट है, मेरे को 11 दिख तो नहीं रहा है, बट लेट जस्ट होप इट वुड. तो एंड दिस इज हाउ लेजेंड ऑफ जेल्डा, दिस इज इट. इसको ऐसे साइड में रखते हैं, एंड लुक एट दिस, लाइक अ प्रॉपर बॉक्स सेट, जहाँ पे आप इसको ऐसा शेल्फ में रखोगे तो आपको ऐसा दिखना तो चाहिए कम से कम कि लेजेंड ऑफ जेल्डा का पूरा दिस सी. एंड दिस इज़ फ्रॉम अ बैकवर्ड, वैसा वाला, क्योंकि किसी किसी में फ्रंट वाले पे रहता है, किसी में बैकवर्ड रहता है. सो दिस इज द फर्स्ट लेजेंड ऑफ जेल्डा ट्वाइलाइट प्रोसेस इज फर्स्ट, एंड उल्टा है क्या, दिस इज अ मांगा एक्चुअली, डोंट नो. तो जनरली इस तरफ से होता है, किसी किसी में उस तरफ से होता है, अगर वो यूएस में प्रिंटेड है तो स्टोरी यूजुअली इस साइड से स्टार्ट होता है. तो अगर आप कंटेंट देखें तो इट स्टार्ट्स लाइक दिस, तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए समथिंग. तो आई डोंट नो द स्टोरी, आई हैव टू रीड, बट आर्ट वर्क वाइज सी द एक्शन पैनल्स, the perspective, it looks more American, I would say, because the dynamic line, the characters, वो anime वाला feel ही है. So it's like a mostly, I think it's anime but little bit on the US वाला style, because क्योंकि anime में you have a certain type of character, certain type of look वगैरह. and ये Pokemon series है, you are in the right, हाँ you are in the wrong, this is the end of the graphic, the properties of his right to left. Unlike English, Japanese read right to left. So Japanese comics are read reverse order from the way English are typically read. The book is printed the original section, blah blah. So yeah, so हमेशा उल्टा रहता है. This is the two. This is how it looks. And I love the cover पे ये है. दूसरे मांगास में ना ये वाला कवर नहीं रहता, ये साइनी ब्लॉस वाला जो कवर रहता है. So at least उतना तो अच्छा किया है, and they are giving you the value. So yeah, and the blacks are also good. Like if you want to see, just look at it. The print looks so nice. The clarity, everything. So yeah, and ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, ज़्यादा ना कटाओ, बट लुक्स फाइन टू मी फॉर नाउ. बट जिसको पता है वो, एंड इफ़ यू सी इट्स अ स्पॉइलर, सो आई जस्ट रन थ्रू द बुक्स एंड जस्ट सी कि कैसा है. जस्ट सी द साइन इम्बॉस और समथिंग उसको बोलते रहेंगे, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट लेट्स सी द आर्ट वर्क्स, लुक्स नाइस. सो मेरे को टाइम लेके एक बार बैठ के एक बार पढ़ना पड़ेगा. तो this is the fourth book, and the same action panels, but it's nice. It's like going better and better. There are more action sequences because वो चीज़ें ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल होती है. Looks nice, ऊपर से story arcs वगैरह. Artwork is nice, so I can only judge the artwork, and everything has an emboss like this. It's nice. So this is I think sixth. Nice panels, blah. Just nice. Then this is the sixth one. And please let us know if you want to see any another, just scrub through. Nice. This also nice. This emboss, I just love their covers, and this one matches the one that we have. And just see, nice. And this is the 8th book. Like all of them looks good. cover भी बहुत अच्छा है, तो आपको लग रहा है कि आप ऐसा ओरिजिनल के आसपास तो है, बट कई जगह पे ऊपर कट गया है, तो क्या लगता है आपको ओरिजिनल है कि नहीं. तो प्लीज़ लेट अस नो.
I think it's a little bit medieval wala anime हो सकता है, because you don't have technology and mostly it's fairy tales, robins, elves kind of, because he has an elf here. So please let me know what is the story and things. I know it's very popular, so must be a good one because so many people are with it. And this is, and it looks like till like क्या वो Tinkerbell वाला types. Sorry if I offend somebody, but that is also a very good story, but in that genre I would say, just based on the character, not anything, but it could be like much more deeper, which I'm assuming it is, क्योंकि somebody actually spent draw. कोई फालतू में इतना draw नहीं करता. AI का ज़माना is different. This is way before AI. So yeah, this is very good quality print, very good quality covers and everything. Link in the description. Please like, share, subscribe and tell us what we should do next. This is Legend of Zelda, Twilight Princess 1 to 11. So all the books are here, and please like, share, subscribe and buy from the link in the description.